Hello everyone. In the journey of preparation of competitive examination, the topic which we will be learning today is simplification. So in this video, we will be learning that if any of the expression is given in which there are so many operations are there, so in which sequence we will be simplifying it. मतलब यदि कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस हैं तो हमें उस किस ऑर्डर में उसको सिंप्लीफाई करना है जिससे कि हमें उसका करेक्ट आंसर मिल सके. And there will be some concepts related to simplification that all we will be learning in brief. Then we'll be solving the questions which are asked in various competitive examination related to the topic. So let's start with the concept of simplification. So first of all, यदि हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है जिसके अंदर प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ब्रैकेट्स भी है, तो हम उसे किस ऑर्डर में सॉल्व करें ये हमें पता चलता है बोर्ड मास रूल से. The board mass rule which we all must be knowing. तो इस board mass rule से हमें ये पता चलता है कि हमें जो भी expression given है उसको हमें किस order में simplify करना है. So according to this rule, B stands for your bracket, O stands for of, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. That means यदि हमें कोई भी expression given है तो सबसे पहले हम bracket solve करते हैं, then off solve करते हैं, then division, then multiplication, then addition and then subtraction. इस order के अंदर हम simplify करते हैं. Bracket के अंदर भी सबसे पहले हम small bracket solve करते हैं, then your curly bracket हम solve करते हैं, and then हम big bracket या फिर square bracket solve करते हैं. यदि हमें क्वेश्चन के अंदर विनक्यूलम गिवन है, विनक्यूलम मीन्स जो बार लगा हुआ होता है क्वेश्चन के ऊपर, सपोज आई एम सेइंग 5 - 3 के ऊपर बार लगा हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस विनक्यूलम को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो विनक्यूलम सॉल्व होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, देन योर कर्ली ब्रैकेट एंड देन योर स्क्वायर ब्रैकेट. ब्रैकेट का जो सीक्वेंस होता है वो ये रहता है. जब ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व हो जाता है देन वी विल बी ऑपरेटिंग विद ऑफ. उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, देन योर डिवीजन, देन योर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन योर सब्ट्रैक्शन. So we will be seeing some question in which we will be using board mass rule. The next comes your modulus. Modulus हम किसी भी रियल नंबर का लें, किसी भी रियल नंबर का, चाहे से वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे से वो निगेटिव नंबर हो, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव ही होता है. मॉडुलस का साइन आपका इस तरीके का रहता है. यदि हम माने कि 5 का हमें मॉडुलस लेना है तो इट विल बी 5, पॉजिटिव ही होगा. यदि हमें लेना है -10 का देन इट विल बी पॉजिटिव 10. मतलब यदि निगेटिव नंबर है तो भी उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और यदि पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही होगा. सो मॉडुलस ऑफ एनी ऑफ द रियल number will always be positive. Numerical value will remain same, but your sign will always be positive. There are some formulas, some identities are there that we are using in various questions. बहुत से questions हैं जहाँ पे हम ऐसी identities को use करते हैं और इन्हीं identities को reframe करके हम और भी identities frame कर सकते हैं. So some of the main identities I have written over here. That is your a plus b whole square is your a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. A plus b, a minus b is a square minus b square. A plus b whole cube is a cube plus b cube plus 3ab in the bracket a plus b. If it is your a minus b whole cube, so its expansion will be a cube minus b cube minus 3ab a minus b. All these identities you have to learn. Everyone should learn these identities because they are directly asked, means in solving the questions, these identities will be used. The next is a plus b plus c whole square will be a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. Then if it is your a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, then its expansion will be a plus b plus c. The next bracket will be of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac. तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनको हम रीफ्रेम भी कर सकते हैं. जैसे कि यदि हम इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड करें, देन योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ओवर हियर प्लस 2ab माइनस 2ab इज गोइंग टू कैंसिल. तो मतलब ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हम इन आइडेंटिटीज से रीफ्रेम भी कर सकते हैं. सो दीज आर द मेन आइडेंटिटीज. देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स वी विल बी सीइंग. अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है a और दूसरा सेट है हमारे पास b. सपोज हम मान लेते हैं कि सेट a के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं दैट इज योर 1 2 3 4 5 हैं, और जो सेट बी है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 4 5 6 7 8 9 है. दीज आर द एलिमेंट्स इन द सेट्स ए एंड बी. अब जो सेट ए है उसके अंदर ये वाला हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को.
अब यदि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स वो पोर्शन जो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। ए और बी में कॉमन क्या है, 4 and 5 इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, सो 4 and 5 विल बी पार्ट ऑफ दिस पोर्शन। नाउ ये वाला पोर्शन हमें शो कर रहा है जो ए का तो पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है। अब जो ए का पार्ट है और बी का पार्ट नहीं है, दैट इज योर 1 2 3, सो 1 2 3 दीज आर गोइंग टू कम ओवर हियर। अब ये वाला पोर्शन शो करता है जो बी का पार्ट है लेकिन ए का पार्ट नहीं है। जो बी का तो पार्ट है लेकिन ए का पार्ट नहीं है, इज योर 6 7 8 9, सो 6 7 8 9 विल कम ओवर हियर। सो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। इट इज योर ए माइनस बी, क्योंकि इसके अंदर वो नंबर्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए का तो पार्ट है लेकिन बी का पार्ट नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है ये शो करता है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी ए और बी में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस पोर्शन, and this portion will be showing the elements which are part of B but which are not the part of A, so it is showing your B minus A. Now इससे related हम कुछ formulas we will be seeing. Number of A मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए के पार्ट हैं वो कितने नंबर्स में है, एंड शोज योर नंबर ऑफ सेट ए सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, दैट विल बी गिवन बाय। देखिए यदि हम इस वाले पोर्शन को, ये हमारा क्या शो कर रहा है, ए माइनस बी को शो कर रहा है और ये ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। यदि ए माइनस बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनका नंबर्स हम ले लें, साथ में ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स हम ले लें, दोनों को ऐड कर दें, तो वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ ए माइनस बी में जितने एलिमेंट है दैट मीन्स योर 1 2 3 दीज 3 नंबर्स, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 and 2, so if we are going to add 3 plus 2 we will be getting 5, that means जो a एलिमेंट है, a जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली यदि हमें सेट B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसके नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, ये हमारा जो सेट है, ये वाला जो पोर्शन है, इट इज शोइंग नंबर ऑफ द एलिमेंट्स विच आर B minus A. This is the portion which is showing B minus A. तो B minus A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, that its number plus नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स हैं, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B will be number of elements in B minus A plus number of elements in A intersection B. Now number of elements in A union B. A union B means जो A का भी पार्ट है B का भी पार्ट है, मतलब दोनों जितने भी एलिमेंट्स A में आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट जिसमें A और B में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स उसके पार्ट हों, तो उसके कितने नंबर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारा आपका आ गया ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर A माइनस बी। ये वाला पोर्शन है A माइनस बी का, ये वाला पोर्शन है A इंटरसेक्शन B का, ये वाला पोर्शन है B माइनस A का। यदि इन तीनों को हम ऐड कर दें तो we will be getting the number of elements in your A union B. So what we will be doing is number of elements in A minus B, number of elements in B minus A plus number of elements in A intersection B. So if we will be adding all three, we will be getting the number of elements in your A union B. So this is how, using the concept, we can find the questions, we can solve the questions, we can find the value of the unknown. Now let's understand how to solve the questions related to simplification using the concept we have learned just now. So here is the first question. 30% of 50 minus 55% of 250, it is equivalent to question mark, means we have to find what is going to come over here, plus 200 minus 99 multiplied by 2 divided by 4. If this is the question, so suppose we are assuming that over here your x is going to come, so we have to find the value of x. 30% of 50 means 30% means 30 upon 100 multiplied by 50. Of means your multiplication. Minus 55% means 55 upon 100 multiplied by your 250. Because we have to write 55% of 250. So it will be 55 over 100 multiplied by 250. Suppose over here x is going to come plus 200 minus 99 multiplied by 2.
So just now we have seen in the board mass, first of all multiplication is done. So पहले हम 200 और 99 को subtract नहीं करेंगे, पहले हम 99 and 2 को multiply करेंगे, क्योंकि board mass के अंदर जो sequence आता है उसमें पहले multiplication आता है, then your subtraction comes. So पहले हम लिखेंगे इसको 200 minus 99 multiplied by 2, 9 2s are 18, 9 2s are 18, that is your 198 divided by 4. Now over here 52 times your 100, 2 15 is 30. So it is your 15 over here, minus 1010 cancelled. 5 is 25, 5 2s are 10. So minus of 55 multiplied by 5. 5 is 25, 5 is 25, 27 divided by 2. It is equivalent to x plus 200 minus 198 will be your 2. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो 200 minus 198 will be your 2. 2 divided by 4. So 2. Instead of division sign we can write it as multiplied by 1/4 also, क्योंकि division को जब हम multiplication में change करते हैं so your number reciprocates. So ये जो 4 था वो reciprocate होके 1/4 हो जाएगा और ये division sign will change to your multiplication sign. So 2 2s are 4. Over here we can see 15 minus, if we are going to divide it, 2 1 is 2, 2 3s are 6, 2 7 is 14.5. It is equivalent to x plus 1/2 means your 0.5. If I am going to take this 0.5 over here, so it will be negative. So 15 minus 137.5 minus of 0.5, it is equivalent to your x. Then 15 minus 137.5 minus 0.5, that will be your 137, because both are negative, these two numbers both are negative, so ये दोनों add हो जाएंगे and sign will be your negative only, so it will be your 138. This is the value of x. अब यदि 15 minus 138 करेंगे, so what the value will come? We will be subtracting these two numbers, लेकिन जो bigger number है वो because negative है तो जो final answer होगा that will be negative. So value of x will be, we will be subtracting these two, 8 minus 5 will be your 3, then your 13 minus 1 will be your 12, and because bigger number is negative, so final answer will be negative. So value of x, that means in the place of question mark, minus of 123 is going to come. Then the second question over here, it is your question mark square. Suppose I am writing over here x is going to come, so I will be writing it is over here as x square plus 112 minus. Now again पहले हम multiplication करेंगे then addition करेंगे. So 12 5 is your 60, and 60 में यदि हम 24 add करेंगे तो it will become 84. So we can remove the bracket even. हमने 12 को multiply किया 5 से, 12 5 is 60, 60 में हमने 24 add किया तो 60 plus 24 will be 84. So हमने bracket remove किया and we have written 84 over here. It is equivalent to 172. अब यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करें 112 माइनस ऑफ 84, तो यदि सॉल्व करें तो 12 minus 4 will be your 8. It will be positive because bigger number is positive and smaller number is negative. So over here plus sign will come. 12 minus 4 will be your 8, and this will become your 10. 10 minus 8 will be your 2. It is equivalent to 172. अब यदि हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो this plus 28 will become your negative 28, and the value will be 12 minus 8 will be your 4. This will become your 16. 16 or you can say 6. 6 minus 2 will be 4, and it is your 144. This 144 is the value of x square. So what the value of x will be? X will be square root of 144. That is your 12. Value of x will be your 12. तो यहाँ पे क्या number आएगा अपना? 12 आएगा. The next question is 22 square minus 3 in the bracket divided by 37 multiplied by 4 square plus 211 is equivalent to question mark plus 16 square. So we know that the square of 22, it is your 484. जो 22 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 484 होता है. 484 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 484 minus 3 will be 481. ये आया 22 का स्क्वायर आया 484, उसमें से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट विल बी 481. नाउ डिवाइडेड बाय योर 37 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर विल बी योर 16 प्लस 211. इट इज इक्विवेलेंट टू, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, x स्क्वायर ऑफ 16 विल बी योर 256. 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा. नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर.
481 को पहले हम डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन या एडिशन नहीं होगा, बोर्ड मास के हिसाब से पहले हम डिवीजन करेंगे। तो पहले 481 को हम डिवाइड करेंगे 37 से। So 7, 14, 7, 3, 21. 13 times it is going to go. 37 multiplied by 13 will be your 481. Now multiplied by your 16 plus 211. This plus 256 I am taking it over here. It will become minus 256 and it is the value of x. 16 को 13 से multiply किया, so it will be your 13 6 13 5 is 60 by 13 6 is 78. 7 carry over, 13 1 13 and 7 208 plus 211 minus 256 is the value of x. इन दोनों को हमने ऐड किया, 8 plus 1 will be 9, it is your 1, 2 plus 2 will be your 4, minus 256 is the value of x. So value of x will be 9 minus 6 will be your 3, then it is your 11, 11 minus 5 will be your 6 and it will be your 3, 3 minus 2 will be your 1, 163 will be the value of your x. x की वैल्यू क्या होगी आपकी 163 हो जाएगी. The next question is 976 multiplied by 265 plus 976 multiplied by 735. So we can see over here it is your law of distributive law, property of distributive of for multiplication over addition. क्योंकि यहाँ 976 हमें इधर भी दिख रहा है, 976 हमें इधर भी दिख रहा है, तो 976 कॉमन हो गया, तो हमने इस 976 को लिया, then it will be 265 plus 735. तो सीधे सीधे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाया, 976 को हमने बाहर लिया, द रिमेनिंग विल बी योर 265 फ्रॉम दिस पार्ट एंड 735 फ्रॉम दिस पार्ट. प्लस साइन वाज देयर इन बिटवीन, सो वी हैव टेकन प्लस साइन ओवर हियर. इट विल बी 976 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 10 0 कैरी ओवर 1, 6 3 9 and 1 10 carry over 1, 7 2 9 10. So it will be 976000. So easily we can find using the identities, using the formulas, using the properties. Now let's understand some more questions related to the topic. So here is the fifth question. 63 divided by 9 multiplied by 96 divided by 8 plus 11 upon 4 multiplied by 9 minus 5. If we are going to solve it, first of all this bracket will be solved. 63 divided by 9. So 7 9 is 63. So it will be your 7 multiplication sign over here. Then we will be solving this curly bracket. 96 upon 8 plus 11 upon 4. I am writing it as it is, 96 upon 8 plus 11 upon 4. Now first of all this small bracket will be solved. 9 minus 5 will be your 4. So multiplied by your 4. पहले हमने bracket solve किया, तो bracket solve किया तो it is your 4 over here. This small bracket is done. Now the curly bracket and your bigger bracket. 4 and 4 cancelled. So it will be your 7 multiplied by, if we are going to see over here, it is your 8 1 is 8, 8 2s are 16, 12. So 12 plus 11. This part is your 12 plus 11. Now this curly bracket will be solved. 7 multiplied by 12 plus 11 will be your 23. If we will multiply these two, 7 3s are 21, 2 7 2s are 14 and 2 16. So solving this part, we will be getting your 161. The next is your 4 upon 3 plus 3 1 upon 2 divided by 5 1 upon 3 of 1 upon 3 minus 2 upon 3 of 6. So पहले ये जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So it will be your 4 upon 3 plus 3 2s are 6, 6 plus 1 will be your 7. So it will be your 7 upon 2 divided by 5 3s are 15, 15 plus 1 will be your 16, 16 upon 3. So जो हमारा बोर्ड मास का रूल है उसमें पहले हम ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन लेते हैं. So ऑफ we will be solving first. Off means your multiplication 1 upon 3. Means first of all we will be solving this part, then we will switch to your division. Minus 2 upon 3 of 6, this part we will be solving first. So ये हो जाएगा 4 upon 3 plus 7 upon 2 divided by 16 1 is 16 and 3 3s are 9. तो ये ऑफ वाला पार्ट हमने सॉल्व किया. Minus 3 2s are 6 and 2 2s are 4 minus of 4. इतना पार्ट हो गया, पहले हमने ऑफ को सॉल्व कर लिया. अब हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे.
तो यदि हम डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे तो इट इज योर 4/3 प्लस 7/2. इस डिवीजन को वी कैन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड वी कैन रेसिप्रोकेट द नंबर. तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 9 को न्यूमरेटर में लिया और 16 को डिनोमिनेटर में, माइनस ऑफ 4. So this will become 4/3 plus 7 9 is 63 divided by 16 2s are 32 minus of 4. Now we will be taking the LCM. So it is your 4/3 plus LCM will be your 32. This is your 63 minus 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Now we will be solving the bracket part. Again it will be your 4/3. अब यहाँ पे ये प्लस 63 है, इट इज योर माइनस 128 बिकॉज बिगर नंबर इज योर निगेटिव, सो फाइनल आंसर विल बी इन निगेटिव ओनली. सो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा. अब हम इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 8 minus 3 विल बी योर 5 एंड 12 minus 6 विल बी योर 6. 65/32. सो अगेन वी विल बी टेकिंग LCM. सो LCM विल बी 62 multiplied by 3. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. 96 will be the LCM. So 32 will be multiplied by 4. So 4 multiplied by 32 will be 4 2s are 8 and 4 3s are 12. 128 minus 65 will be multiplied by 3. So 5 3s are 15. Carry over 1. 6 3s are 18 and 1 19. 195. Again your smaller number is positive and bigger number is negative. So final answer will be your negative only. So final answer will be negative. From 15 if we will be subtracting 8, so we will be getting 7. Then it will become 8. 8 minus 2 will be your 6 and this is 67/96. This will be the answer. Now the next question is a minus b whole square over b minus c divided by c minus a plus b minus c whole square over c minus a minus b plus c minus a whole square over a minus b minus c minus 3. इसकी वैल्यू क्या होगी यदि a is not equivalent to b is not equivalent to c. बिकॉज यदि a और b इक्वल हुआ सपोज, तो a माइनस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो दैट्स द रीजन दिस कंडीशन इज गिवन टू यू. नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सॉल्विंग दिस मच ऑफ पार्ट. सो ओवर हियर हमने इस तीनों को सॉल्व करने के लिए पहले LCM लिया. सी a माइनस b इधर आ रहा है, a माइनस b इधर आ रहा है, b माइनस c आ रहा है, b माइनस c माइनस a, c माइनस a. सो LCM विल बी योर a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a. अब यहाँ पे b माइनस c और c माइनस a आ रहा है, क्या पार्ट नहीं आ रहा, a माइनस b नहीं आ रहा. तो a माइनस b विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर a माइनस b होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम a माइनस b होल क्यूब. सिमिलरली इधर वाले डिनोमिनेटर में c माइनस a आ रहा है, a माइनस b आ रहा है. व्हाट इज नॉट कमिंग इज योर b माइनस c. सो b माइनस c विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर b माइनस c होल स्क्वायर. दैट विल बिकम योर b माइनस c होल क्यूब. प्लस सिमिलरली इन दिस वे इट विल बिकम योर c माइनस a होल क्यूब माइनस ऑफ 3. नाउ देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है ये. अगर इस पूरे पोर्शन को हम सपोज x मान लेते हैं, ये x क्यूब हो गया, ये y क्यूब हो गया, ये z क्यूब हो गया. यदि इन तीनों को हम ऐड करें, ये आपका x हमने माना है a माइनस b को, तो a माइनस b माइनस c आपका y है, तो इसको भी हमने ले लिया, और आपका z जो है वो c माइनस a है, इनको भी ले लिया. यदि हम इन तीनों को ऐड करें, सो योर a एंड माइनस a इज गोइंग टू कैंसिल, माइनस b माइनस c प्लस c, तो इट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 0. हमने एक आइडेंटिटी स्टार्टिंग में देखी थी, दैट वाज योर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. इट इज इक्विवेलेंट टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac. ये आइडेंटिटी देखी थी. यदि इसको हम वापस से रिफ्रेम करें, तो a प्लस b प्लस c, यहाँ पे हमने a क्या है, दिस इज योर a, और यू कैन से x, दिस इज योर y, दिस इज योर z, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x क्यूब y क्यूब z क्यूब के एडिशन की चाहिए. तो अगर हमारा x y z या a प्लस b प्लस c 0 है, जहां हमने करके देखा कि इन तीनों का सम जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा. 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी योर 3abc. यानी कि एक और फॉर्मूला होता है, वी कैन से दैट इफ a प्लस b प्लस c इज इक्विवेलेंट टू 0, इन दैट केस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी योर 3abc. इसको हम डिराइव करा है इसी आइडेंटिटी से. यानी कि अब यहाँ पे इसका
क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, इन तीनों को ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन इंडिविजुअली दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट इज कमिंग इक्विवेलेंट टू 0. सो क्यूब ऑफ दिस प्लस क्यूब ऑफ दिस प्लस क्यूब ऑफ दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ योर ए बी सी. सो इसको न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ a is your a minus b, b is your b minus c and c is your c minus a. इसका एक्सपांशन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय योर a minus b, b minus c, c minus a and minus of 3. This a minus b cancelled, b minus c cancelled, c minus a cancelled. This is your 3 minus 3, that will be 0. तो इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, सो फाइनल आंसर विल बी योर 0. The next is your 5z minus 12y whole square plus 12z plus 5y whole square minus 144z square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So we can see over here, this is your a, this is your b, so it is your a minus b whole square. This is your a, this is your b, this is your a plus b whole square. So what the identities are? A plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. a minus b का whole square क्या होता है? It is your a square minus 2ab plus b square. अब इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ओपनिंग दिस ब्रैकेट. सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5z. 5z का स्क्वायर विल बी 25z स्क्वायर. दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 12y का होल स्क्वायर, दैट इज 144y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a into b means 2 multiplied by 5z multiplied by 12y. 2 into 5 will be 10. 10 multiplied by 12 will be 120 yz. ये हो गया इस वाले ब्रैकेट का एक्सपांशन. अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे. a स्क्वायर मीन्स 12z का स्क्वायर इज 144z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज योर 5y स्क्वायर मीन्स 25y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 into 5 into 12 will be 120 yz minus 144z स्क्वायर. अब देखिए 120 yz negative, 120 yz positive, both are going to cancel. It is your 144z square negative, 144z square positive, both are going to cancel. Is anything else is getting cancelled? It is not. So it is your 25y square plus 25z square plus 144y square. It is remaining part. 25y square, 144y square and your 25, this much of the part is remaining. Now here y square, here y square means coefficients आपके जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर योर लाइक टर्म्स. तो इनको यदि हमने ऐड किया तो दिस पार्ट इज योर 25z स्क्वायर और इन दोनों को हमने ऐड किया तो इट इज योर 5 plus 4 is your 9, 4 plus 2 will be your 6 and it is your 169y square. क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे. सो इट विल बी योर 169y square. दिस इज योर अनलाइक टर्म, so it will be remaining as it is. So final answer will be 25z square plus 169y square. So here are some more questions. Question number 9. If x, y, z are real numbers such that x plus y plus z is equivalent to 10 and xy plus yz plus zx is equivalent to 18, then find x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. We have to find its value. So we know the identity. अभी हमने देखा था कि if it is your x plus y plus it is your x cube plus z whole square, x plus y plus z whole square is could be written as your x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. This is the identity we have learned. Another identity is your x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. It is equivalent to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. These two are the identities. यदि अब इन दोनों आइडेंटिटीज को हम मिक्स करें, सी दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज हियर, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए पॉजिटिव 2xy पॉजिटिव 2yz प्लस पॉजिटिव 2zx चाहिए. हमारे पास यहाँ पे निगेटिव में है ये नंबर्स. यदि इसमें हम प्लस 2xy
plus 2yz plus 2zx minus 2xy minus 2yz minus 2zx करें, सो देयर वोंट बी एनी चेंज, क्योंकि जो हमने ऐड किया है वही हमने सब्ट्रैक्ट भी किया है. सो इसकी वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. हमने क्या किया, इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव एडेड 2xy 2yz 2zx, और जो हमने ऐड किया वही हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया. तो यदि हम इस पार्ट को देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ये वाला पार्ट मिला के हमारा क्या आइडेंटिटी बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बन रहा है. हम इसमें कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है, हमारे पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. और जो हमें वैल्यू चाहिए वो इसकी चाहिए, यानी कि हमें इस वाले पार्ट की वैल्यू चाहिए. सो दिस कुड बी रिटन एज x प्लस वाई प्लस जेड, इस वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इन तीनों को मिला के हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. सो दिस इज योर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. रिमेनिंग क्या बचा, माइनस एक्स वाई माइनस 2xy, सो इट विल बी माइनस ऑफ 3xy. सिमिलरली माइनस ऑफ 3yz माइनस ऑफ 3xz. दिस इज द रिमेनिंग पार्ट. और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, this is your x plus y plus z whole square, minus of 3 could be taken common from here, minus of 3 taken common, remaining is xy yz xz. Now we are having the value of x plus y plus z, that is your 10. So if we are going to keep this value over here, this will become 10 multiplied by square of 10, that will be your 100, minus value of xy plus yz plus xz is given to you as 18. So 18 multiplied by 3. 18 3s are 8 1 it's a 24, 2 54 it is. Now 100 minus 54, it will be your 46. So final answer will be your 460. So हम जो आइडेंटिटीज हमें गिवन है उसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन we will be changing it and then we will be solving it. Now if the question is x over x plus y plus z is equivalent to y over x plus y plus z is equivalent to z over x plus y plus z is equivalent to 2k over 3, and x is greater than 0, y is greater than 0, z is greater than 0, so what the value of 6k will be. So पहले हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ले लेते हैं. So इन दोनों पार्ट से हमारे पास 2k की वैल्यू क्या आएगी, बिकॉज वी वांट 6k, यानी 2k हमें 3 टाइम्स चाहिए. तो हम यहाँ से इस वाले पार्ट से और इस वाले यानी इस वाले पोर्शन को हम इक्वेट कर रहे हैं 2k ओवर 3 से. तो यदि हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय योर x, और आई कैन राइट इट एज x ओवर x प्लस वाई प्लस z, इट इज इक्विवेलेंट टू 2k ओवर 3. अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इट इज योर 3x, 3 will be multiplied by x, that means 3x, it is equivalent to 2k over multiplied by x plus y plus z. ये 2k मल्टीप्लाई हो गया x plus y plus z से, और ये 3 मल्टीप्लाई हो गया x से. Now what the value of 2k will be, it will be 3x upon x plus y plus z will be the value of your 2k. सिमिलरली यदि हम इन दोनों पोर्शन को इक्वेट करते हैं, y ओवर x प्लस वाई प्लस जेड को इक्वेट करें 2k ओवर 3 से, तो हमारे पास 2k की वैल्यू क्या आएगी, 2k विल बी 3 टाइम्स ऑफ y ओवर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगी. सिमिलरली 2k की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 ऑफ z डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगी. हमें वैल्यू चाहिए 6k की, एक 2k इधर है, एक 2k इधर है, एक 2k इधर है. यदि इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, 2k will become your 6k. 6k is equivalent to 3x over x plus y plus z plus 3y over x plus y plus z plus 3z over x plus y plus z. हमने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6k की वैल्यू ये आ गई. अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, that will be your x plus y plus z. Numerator will be 3x plus 3y plus 3z. 3 could be taken common over here, so it is your x plus y plus z, and in the denominator even it is your same, both are going to cancel. So what the value of 6k will be, it will be your 3. Value of 6k will be your 3.
Now the next question is a raised to the power 7 multiplied by b raised to the power 8 multiplied by c raised to the power 7 divided by a raised to the power 9 multiplied by b raised to the power 5 multiplied by c raised to the power 4. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने देखा है कि यदि हमारे बेसिस सेम हो और डिवीजन का साइन हो इन बिटवीन, देन द पावर्स आर गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड. यानी कि क्या होगा, यहाँ पे a की पावर 7 है, डिनोमिनेटर में a की पावर 9 है, सो बोथ आर गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड. a रेज टू द पावर 7 माइनस 9. नाउ b की पावर 8 है इधर और डिनोमिनेटर में b की पावर 5 है, मींस डिवीजन में है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएंगी. ओवर हियर इवन c रेज टू द पावर 7 माइनस 4. So it will be a raised to the power 7 minus 9 will be a raised to the power minus of 2 multiplied by b raised to the power 8 minus 5 will be 3 and c raised to the power 7 minus 4 will be your 3. या तो इस फॉर्म में आंसर होगा, अदरवाइज दिस कुड बी टेकन इन द डिनोमिनेटर इवन बिकॉज पावर इज नेगेटिव, सो वी कैन टेक इट इन डिनोमिनेटर इवन एंड द पावर विल बिकम पॉजिटिव. The next question is 4 raised to the power 3 minus 0 raised to the power 2 plus 22 by 2 divided whole raised to the power 2 minus of 8 plus 7 multiplied by 6. What its value will be? 4 raised to the power 3 means 4 into 4 into 4. So 4 4 is 16, 16 4 is 64. This part is 0, so just we are ignoring it. 2 11 times your 22 and square of 11 is your 121. Minus of 8. First of all, we'll multiply 6 7 is 42. This is the value. Now we will be solving it further. पहले हमने इन दोनों को ऐड किया. 4 plus 1 will be your 5. Then 6 to 8 and it is your 185 minus of 8 plus of 42. इन दोनों को subtract करेंगे. So 15 minus 8. 15 minus 8 will be your 7. This will become your 7 and this is your 177 plus of 42. 7 2s are 9. 7 and 4 11 and this is your 2. 219 will be the answer. So this is how we will be using the laws and we will be solving the questions. Now let's understand last few questions from the topic. The 13th question is 469 divided by 270 divided by 3 upon 7 multiplied by 35 plus 19 multiplied by 3 minus 21 by 2 minus 5 by 2. So what we will be doing is, first of all, I am writing all these numbers as it is. This is division. 270 divided by 7 5 is 35. So 3 5 is 15. 15 will come here plus 19 3s are 57. 27, yeah, 57 it will be minus of, over here in the bracket, first of all we will take LCM. LCM will be 2 only. So numerator will be 21 minus of 5. 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी और 16. न्यूमरेटर विल बी 16 डिवाइडेड बाय 2. हमने क्या किया इस ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज माइनस साइन है तो हमने एलसीएम लिया, दैट विल बी 2 ओनली. न्यूमरेटर विल बी 21 minus 5. 21 minus 5 will be your 16. So 16 divided by 2 it will be your 8. यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी और its value will be your 8. Now we will be solving it further. 469 divided by 270 को यदि 15 से डिवाइड करें, so 15 1 is 50, it will be 15 8 is 270 plus 57 minus of 8. This is the bracket over here 27, this is 416, this is the bracket over here. यहाँ पे 469 divided by ये bracket है, यहाँ bracket में हमने solve किया 270 divided by 15, that will be 18 plus 57 minus of 8 we have written as it is. Now it is 469 divided by, यदि 18 में से हम चाहे तो इन दोनों को पहले ऐड भी कर सकते हैं एंड चाहे तो 18 minus 8 भी कर सकते हैं. तो 18 minus 8 किया हमने तो it will be your 10 और 10 plus 57 करेंगे तो इट विल बी योर 67. अब यदि इन दोनों को डिवाइड करें तो 7 7 is 49, 4 कैरी ओवर, 6 7 is 42, और इट इज गोइंग योर 7 टाइम्स. सो 469 को यदि 67 से डिवाइड करें सो योर फाइनल आंसर विल बी योर 7. Now the next question is, this much is the expression, we have to solve it. So first of all we will be solving the brackets. So coming to bracket, ये हमने लिया 18 minus 3 multiplied by 3 minus 3 multiplied by. Now see,
this division sign is there, so division को यदि हम multiplication में change करें तो this 1/3 will reciprocate, तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. So 3 multiplied by 3 multiplied by 3 will be your 9, और 9 minus 3 करेंगे तो it will be your 6. यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल बी 6, बिकॉज इस डिवीजन साइन को हमने चेंज किया मल्टीप्लीकेशन में एंड वी हैव रेसिप्रोकेटेड 1/3, so it will turn to 3. 3 multiplied by 3 will be 9 and 9 minus 3 will be your 6. So solution of this bracket will be your 6 plus 3 divided by 1/3. Again 3 divided by 1/3 could be written as 3 multiplied by 3, that will be your 9. So this part will be your 9. This part is 9, then your plus of 3. This much minus 4 multiplied by 2 is your 8. Bracket close. Now we will be solving this bracket. 18 minus 3 multiplied by, if we are not writing any of the sign, directly we are using the bracket, then also its meaning is multiplication only. So अब हम क्या करेंगे, पहले multiplication होगा. पहले multiplication होगा means first of all we will multiply these two numbers. 6 3s are 18. So this part will be your minus of 18. So this is your 3 minus of 18. This part is done. Plus 9 plus 3 will be your 12. Minus of 8. Then 18 minus 3 multiplied by what? This is your 12 positive. This is your 3 positive. 12 plus 3 will be your 15. 15 is a positive number and negative number is your 18. So 15 minus 18 will be minus of 3. So solution of this bracket will be your minus of 3 minus of 8. 18 minus 3 over here, minus 3 over here. Minus 3 will be multiplied by minus of 3 will become plus of 9. So this is plus of 9 minus of 8. Now 9 minus 8 will be your 1 and 18 plus 1 will be your 19 will be the answer. So this is how you will be following the sequence and will be solving the expression. So now the 15th question. Root of 121 multiplied by question mark square minus 6 multiplied by 2 multiplied by 11, it is equivalent to 429 multiplied by 8. So over here instead of question mark we will be taking x square. So this will be, we know square root of 121 is your 11. So this will be your 11 multiplied by x square minus 6 multiplied by 2 will be your 12 multiplied by 11. It is equivalent to 429 multiplied by 8. Now we can see over here that 11 is common in both the two terms. In this term also 11 is there, in this term also 11 is there. So we can write it as 11 हमने common ले लिया. Remaining will be your x square minus of 12. It is equivalent to 429 multiplied by 8. अभी 11 को हम डिवीजन में लेके जा सकते हैं. So it is your x square minus 12. It is equivalent to 429 multiplied by 8 divided by 11. 11 3 is 33 and 11 9 is 99. So value of x square minus 12 is 39 multiplied by 8. 8 9 is your 72 and 8 3s are 24. 24 and 7 will be your 31. So this is your 312. This is the value of your x square minus 12. तो x square की वैल्यू कितनी हो जाएगी? It will be 312 plus 12. यानी कि x square की वैल्यू हो गई 324. So what the value of x will be? X will be square root of 324. That will be your 18. Square root of 324 कितना होता है? 18. So value of x will be, that means instead of question mark 18 is going to come. Now here is the last question. If x cube plus 1 upon x cube is equivalent to 65 upon 8, y cube plus 1 upon y cube is 730 over 27, then what the value of x, y will be? Over here we can see that 8 is there and 8 is cube of 2, we know that. And here 27 is there and 27 is cube of 3. Now we are assuming that x is equivalent to, we are keeping 2. We are keeping x is equivalent to 2. So if we are going to keep x is equivalent to 2, what this part will be? It will be your 2 cube plus 1 upon 2 cube. That means 8 plus 1 upon 8. If we will be solving it further, 8 8 is 64 plus 1, that is 65 upon 8, which is coming equivalent to your 65 over 8. ये वैल्यू एकदम सेम आ रही है, यानी x की वैल्यू क्या है? 2 है. अब यदि हम y की वैल्यू हम 3 पुट करके देखें, if we are going to keep y is equivalent to 3, so what this part will be? It will be cube of 3. It is cube of 3 plus 1 upon cube of
3. Cube of 3 is your 27 plus 1 upon 27. 27 LCM हुआ. 27 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे. What is going to come? 27 into 27. 7 is 49. 7 2s are 14 and 18. It is your 7 2s are 14. 2 2 4 and 1 5. 9 12 5 6 729. Now it is 729 plus of 1. That is 730 over 27. ये exactly same आ गया 730 over 27, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई. अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो xy की वैल्यू क्या होगी? xy will be your 2 multiplied by 3, that is your 6. So this is how, using the concepts, we will be simplifying the various questions. These were the questions which were asked in various competitive examination in last 2 or 3 years. So this is all from this topic. Soon we'll be coming with the more topics related to your competitive examination. Hope it is clear to you. You are getting it. Till then, thank you.